Will you start? Yes. जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन नमो सभी की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नक्षप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम Canto 2 Chapter 1 Text 11 very famous sloka of Srimad Bhagavatam. In my classes I must have recited this sloka maybe hundreds of times. I liked it so much. It says, Etanya nirvidyamānānām ichhatāṃ akuto bhayam yoginām nirpanirnītam harināmānukirtanam. Etanya nirvidyamānānām ichhatāṃ akuto bhayam yoginām nirpanirnītam harināmānukirtanam. Etanya nirvidyamānānām ichhatāṃ akuto bhayam yoginām nirpanirnītam harināmānukirtayan. What meaning? एतत् यह है निर्विद्यमानानाम जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है उनका। इच्छताम जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनका। अकुत भयम समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त। योगिनाम आत्मतुष्टों का। निरप हे राजा निर्णीतम निश्चय सत्य। हरे हे भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम अनु किसी के पीछे सदैव कीर्तनम कीर्तन। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे राजन महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। परपोर्ट श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद आध्यात्मवादियों का नंबर आता है जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त है जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल।
वे भगवान कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते हैं। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते हैं तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रखते हैं। नहीं, वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप में परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है, भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से कर्मशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलताओं के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक तथा या भगवत भक्त के रूप में पहले से ही सफलता प्राप्त कर ली है। ओके, आगे भी है क्या? श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही साथ पद्म पुराण के समस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है, क्योंकि यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना जिन्होंने भगवान के महिमा का उपदेश किया है। दूसरा अपराध भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्धि नहीं होती है। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसे पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं, और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं, और मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह
भेदभाव नहीं समझते हैं। तीसरा अपराध है कि प्राधिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। पांचवा अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी सांसारिक गण के अनुसार परिभाषित करना। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्यों को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझें। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या। न तो भगवान काल्पनिक हैं, न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम को पवित्र नाम के कीर्तन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति यदि दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप करता है कि भगवान के पवित्र नाम के जब से पापों के प्रभाव से निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे अपराधी शुद्धि की किसी भी समस्तुति विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के रूप में जबकि पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और प्रतिरक्षित बने जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने के विलग रहे और कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है। अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा से नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वह न तो किसी का सेवक है, न ही आदेश पालक। इस प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते हैं। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है, तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है कि पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है, वह है झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। सारा भौतिकतावादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। That is the beautiful informative purport by His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। ओम ज्ञान दिव्यांत से ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषंतमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति वदन्तिकं
वंदेयं श्रीगुरु सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्तिकजन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुतले श्रीमती जय पताका सुमनित नामने नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधनामने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेषण्यवागी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आज हिंदी वाले लोग बहुत कम हैं, तो आज इंग्लिश में प्रवचन हो जाए। Should I speak in English today or? Yeah, good idea. Thank you very much. So actually, Thank you. this is the beautiful sloka. This is one of my attraction, and I've been quoting this for n number of times. I have heard it from my Shiksha Guru, and he also beautifully explained. Generally, in English, if we read the purport of Srila Prabhupada and break it down at every full stop or every comma, to explain this sloka and explain the purport of Srila Prabhupada, it may take more than a week. So important the purport of Srila Prabhupada. And I tell people, these purports are ecstasy of Srila Prabhupada. He is very ecstatic when he is writing. Every word has a meaning. And every word has a message. So today, Sukadeva Goswami is revealing the secret to addressing to Parikshit and the assembly all around. They are saying that one should constantly chant the holy name of the Lord. Those who want to get away from the fear, Ichchata Bhayam, those who want to get rid of this problem of life, get out of this mark, as we quote sometime, Eka Nisakantako Pantha, Yatrasam Pujate Harihi, Kupantam Tam Vijaniyam, Govinda Rahitam Gamam. There is only one road, a royal road going back home, back to the Godhead, that is where the Harinam is going on. Eka Niskantoko Pantha, Yatra Sampujate Hari, where the worship of Lord Hari is going on. And Hari by particular, Hari takes away. Hari, Haraya. He takes away. Kupantham tam bijaniya, or any other process or any other road which does not lead for the love of God is known as Kupantha. There's a problem at every step. Padam padam yat vipatam. At every step there is a problem. But those who have a little tinge of enjoying the material prosperity, for them is very, very difficult to obtain God. I can quote an example. When the maid son, as Narada Muni, he is telling, when he went to the northern side and he found a jungle, beautiful jungle, fruits laden, trees laden with the fruits, crystal clear water. And he thought, this is the place where I'll do worship. But in the meantime, what happened? He saw Paramatma within the heart.
You visualize, and Paramatma disappeared. Oh, Narada became very upset. My God, what mistake I must have done? That I saw Paramatma within the heart and he disappeared. So when one voice came, oh my dear boy Narada, actually you are not depending upon me. He said, huh? You are depending on the fruits of the tree. You are drinking on the nice atmosphere, cozy atmosphere. You are attracted to the cold water. So you have the attraction for these, not for me. And Narada got, he said, my God, but this is to obtain you. Well, no, if you try to obtain me, then I give you what you want. But at the moment, you are utilizing these things to know me. Now, you cannot know Krishna by utilizing these things. You can use Krishna that you utilize. He'll give the utility. As yesterday we were saying, Jnanadipena Bhashvata, isn't it? Anyway, Prabhupada has never quoted Mirabai, but I am to quote her Mirabai today. You know, every lady, particularly in our Sanatana Dharma, every lady, they consider their husband as Paramatma. Paramatma, my husband is Paramatma. But Mirabai was the one who said, no, Paramatma is my Pati. Not my Pati is Paramatma. No. How my Pati can be a Paramatma? Just tell me. Nonsense, isn't it? But yes, Paramatma is the Pati. So understanding. Even many of us, we are Mokshagami. Oh, by doing this, I'll leave the material world. I'll go back home, back to the Godhead. I'll dwell in the realm of Goloka or Sweti Dvipa or Mathura and Dwarika. You know, that's the desire, right? Still, that's a desire. What is the desire? You want to enjoy. I go there, I do this. See, you want to enjoy. The propensity of enjoyment is still there. And if you have a little small tinge of propensity to enjoy, then it is very, very difficult to get the Lord. But knowing the condition of Kali Yuga, the sages at Namaskar are saying to general public, Akamaha, Sarvakamova, Mokshakama Udaridhi, Tivrena Bhakti Yogena, Ijeta Purusham Param. Akama Sarvakama. Whether you are Akami, you have no desire, or whether you are Sikami, or whether you are Mokshagami. Akama Sarvakama va Mokshakama Udaridhi. Tivrena Bhakti Yogena, Ijeta Purusham. Whatever desire you may have, you worship Krishna. Not in gain. As Prabhupada was saying the other day, that God is actually, we have treated him as our order supplier. Go to the temple, my dear Lord, give me this, give me that, give me this, give me that, give me this, give me that. So, we have treated him as our order supplier. So even this Kanksha, that yesterday we were talking about, no? We will get moksha, will this. What moksha, man? If you cannot get the moksha within the living, after death, who knows? And Prabhupada is even see, he is criticizing Atma Rama. Atma Rama means they are enjoying in themselves. They are enjoying with the Atma. They are not enjoying with Paramatma. So even the Atma Ramas, Atma Rama means they have no bodily desire. But at the same time, they are only relishing their Atma. They are not relishing with Paramatma. So Prabhupada Singh Anvasa commentary, even Atma Ramas, yeah, they have a desire. And we have a desire, right? I have heard people saying so much, and the last time comes, everyone will be lying in the bed with the white bed sheet and nice pillow and Prabhupada's tapes running and so many people chanting, and I just say, bye-bye, Hare Krishna. Is that possible? If that we cannot do now, how is possible we will do in the future? So, if anybody in Ichha dvesha samutvena dvandva mohena bharata. If I have Ichha, I will have a dvesha. And if Ichha dvesha, there is dvanda. And there is dvanda, you cannot get Krishna. Is Krishna consciousness, it's Shurishya Dhara. Toward the end,
The Suta Goswami is saying, my dear Lord, after delivering the Bhagavatam and so many other scripture to the sages for 1000 years, and he's saying, my dear Lord, even if you have to be born anywhere, but please just do me a favor, give me association of your devotees. He's not saying that I'll come back and go Loka and I'll do this. No, nothing. It is your prerogative. You can do what you want. You can do what you want. But my only wish is, I relish the association. And please, that's what you do. But Prabhupada was saying very nice. Acha, so 10 offices Prabhupada has written very nicely. That word was a very nice word. When I said very nice. Somewhere was there. I don't know where it is. So, Sukadeva was saying, my dear Parikshit, whatever I am going to tell, this has been ascertained. This has been recommended. This has been practiced by previous acharyas. It's only because I am saying, I am an authority, and I have heard from my father and whatever said as the last. He said, no. All this has already been practiced. All this has already been in place. And therefore, I am just come here to remind you. Remember Prabhupada's, the first interview in London, where his mother wanted him to go to London for a study. Father never wanted. And then he goes to London after 70 years. And remembering his mother, oh, at least my mother's desire is fulfilled. I have come to London. And in the airport, somebody asked, Swamiji, what have you brought? What message you have brought? I heard you have so many temples in America. Prabhupada said, new message? I don't have any new message. But then what? He said, I have come to remind you what you have forgotten. I just come to remind you have forgotten. See, that is the, here also, Sukacharya is saying, it is concluded. Etanya nirvidamananam Etanya nirvidamananam Ichhata makuto bhayam yoginam nirpaninitam. All the yogis, the nirpa, Raj rishis, Brahma rishis and yogis, they have ascertained. Yes. What? Hare Namanu Kirtaya. Just only Nam Kirtaya. Are you realists? Definitely realists. Prabhupada gives an example. You see, so many people say that the wooden deity or the stone deity, how you can say it is God? So Prabhupada gave an example. See, in your country, there is one GPO, General Post Office. And in a different place of the city, they have put a post box. Red in color or yellow in color. Now, this post box is not the GPO, but is an authoritative representative, authorized representative. So if you write a letter, put an address and put it in this box in anywhere of the city, your letter will reach 10,000, 20,000 miles away. Similarly, the deities of the wood you are talking about, though they have Pran Pratishtha, or the stone you are talking about, they are the same authorized agency. You tell them something and it goes to Golok Dhama directly. You don't have to go GPO for everything. Put your letter anywhere. Okay, nowadays there's email, but anyway, that time Prabhupada gave an example. So they are the representative. And why representative? Because that's what we can understand. If God comes in front of us with his Virat Rupa, with maybe one finger is as good as maybe 100 meters long, how can you understand? How can you understand? The radius of our planet is 4 billion miles. And like that, there are trillions and trillions. If everything comes together in one body of the Krishna, can you be able to understand him? No. So by his Anukampa, he has come in the form of wood. It says, I think Uddhava asked,
My dear Lord Krishna, now you are about to go. How would we see you, associate with you, and have your darshan? So he says, Hey Uddhava, Saili, Darumahi, Lohi, Lepyacha Saukati, Manomai, Manimi, Astavida Asasmrataha. My dear Uddhava, you can see me in the wood, in the stone, in the sand, in the writing, in the painting, and in jewel, and within the mind. These are the 8 ways you can always associate with me. So Prabhupada is saying he has done an anukampa on us. Otherwise, without charma chakshu, we will not be able to see the God. Are what God? You cannot see the sun more than a minute. And Krishna is Sahasra Shura Shaha. Thousands and thousands of the suns are in his body. Will you be able to see him? So he has rather done his anukampa on us. So he said, only those who are free from the material desire. Any desire separate from Krishna. I will enjoy in Golok Dhama. So you want to enjoy, right? You're not going to, I will serve Krishna. No, I will enjoy. Then I'll have no fever, I'll have no pain, I'll have no birth, I'll have no death. It's still concentrating me. I'll be free from disease, free from birth and death, free from anxiety, free from... You say, me. And Krishna says, not me. It should be you. There was one boy, he fell in love with a girl. And the boy will come to her house, knock her door, and she will say, who are you? He will say, it is me, your lover, it is this, it is that. She will not open the door. So this fellow kept coming, and every time she said, who are you? He says, my name is this, it is me, everything me. She said, not open the door. Final time he came. He said, who are you? He says, I'm nothing without you. I'm nobody. I have no existence. I'm like a dirt. But if you meet me, then I can consider myself that I'm something. And the girl opened the door. So long we have the feeling that me. Then Krishna is very far. Very, very far. He is very near. Hari, Haraya. He is very, very near and very, very far. As Prabhupada is saying in the last line, me and mine. We are considering me and mine. बहुत टाइम से ना प्रभु जी why don't you join my Bhagavatam class? I don't do that, but then I say, Prabhu ji, why don't you join my Bhagavatam class? Or somebody, why don't you ask me to give? I can give a class. And believe me or not, you will not believe me what I'm saying. I have never ever asked anybody that I want to give a class. Never ever. Never pose myself, I'll give a class. If somebody says, okay, you want to speak? Yes, I can. So again, it's a me, I want to give a class. Give me a chance. No, like that. It's Krishna. The way he wants to give, what's the problem? But the whole thing is there, we should remember Krishna throughout. We are talking this for many, many days and months now. In our subconscious mind, the remembrance of Krishna, or the Leela, or his name should go on and on and on and on. Otherwise, big problem. I request you all again, please give some time to read this particular purport of Srila Prabhupada, and for your own understanding, you can make the points, bullet points for yourself. Oh, this what it is, this what it is, this what it is. You will get maybe hundreds of bullet points from Srila Prabhupada. And you can, future, whenever you give a class, you can refer and you can talk about that. It is so very nice purport. Very lengthy, very informative, and full of ecstasies. So, I will read the sloka again and then I'll close the session. Etanam, eta nirvidyamananam, ichatam akuto bhayam, yoginam nirvanirnitam hare namanukirtaya.
You must have seen Muslims, right? When there is Azan time, practically they run. They don't want to miss that one moment. Particularly, they don't want to miss it. If you see in Sardars, every one of them, they'll do seva. There is no position. If no seva, then they'll polish the shoes of all those who have put the shoes outside. They'll polish them with their own handkerchief. Seva. The Christian, full of administration, strict to the time. And we all Sanatana Dharma, we are very casual. Very, very casual. Yeah, it's okay. So what? If I'm a little late. No, we don't have that urgency in life. We should really feel the urgency as these people are running, practically running, leaving everything behind, opening their shops and everything. They just run. They don't want to miss that one moment. But we Sanatana Dharma people, we have taken it very, very casual. Very, very casual. And that was another point that we couldn't teach our generation what is it to become a devotee, to serve the Lord. Then we don't have to worry whether we go to the hell, whether we go to the heaven, whether we stay here in Mrityaloka. What difference does it make? Wherever the name is Krishna, he is always in Goloka. And will always be in Goloka. Even the mortal world which you are talking, Kali Yuga. No, it is for more than Satya Yuga. More than Devi Dhama. More than Mahesh Dhama. More than Hari Dhama. It is just Vaikuntha. No, it is Goloka. So that we have to set up that mentality. श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता. So it's up to us. We want to remain in Kali Yuga, or you want to remain in Mahesh Dhama or Hari Dhama. It's up to us. We can achieve. We have the potency. Everyone has the potency. The potency is Atma. If Atma awakens, that's it. That's it. So with this, I'll come to the conclusion. But again, requesting again, if you read Prabhupada, please make points for you in your special notes. It'll help you in your future either discussion or giving a class and things like that. Hare Krishna. Thank you very much.